हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्बास ऑफिशियली। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हाउ टू मेक मनी ड्रॉप शिपिंग इन 2023। तो आप लोग ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए से जो है वो किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं 2023 के अंदर। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। Starting a dropshipping business is appealing for many reasons. You don't have to worry about inventory management. You don't have to worry about product fulfillment. In fact, your only task is to sell products, take orders, and make a decent profit. Sounds easy, right? Unfortunately, it's not that simple, and with any business model that sounds too good to be true, there are always gotchas. In theory, a dropshipping business sounds like a great idea because it's inherently scalable without requiring a large upfront investment, but when you dig down a bit further, there are many complications that you need to be aware of. Most people try to open up a dropship shop expecting it to be easy, but in reality, there is more to it than you think. This article will provide you with a realistic and comprehensive view of how to make money dropshipping and pros and cons. Get Table of content: what is dropshipping? Is dropshipping legal? And so more. So सबसे पहले देखते हैं कि ड्रॉपशिपिंग क्या है। ड्रॉपशिपिंग इज एन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल वेयर एन ऑनलाइन स्टोर डज नॉट कैरी इन्वेंट्री फॉर द प्रोडक्ट्स itself. When an order is made, the online store purchases the products from the wholesale supplier who then ships the order directly to the end customer. As a result, the online store owner does not have to store physical inventory or perform any shipping and handling. There are no upfront inventory costs because all products are purchased on demand with no minimum order quantity. As a result, you can start a dropshipping business for less than $3 with a free open source shopping cart like WooCommerce. All you need is a website, free credit card processing, and you can start taking orders immediately. Recently, my 9 and 11-year-old kids launched their own dropship e-commerce store, selling entrepreneurship t-shirts for only $2.95. You can check out their shop over at kidincharge.com. Is dropshipping legal? Dropshipping is 100% legal as long as you obtain all of necessary sellers permits like a traditional e-commerce store. After all, a dropshipping business is just like any other online store except a third-party supplier handles the shipping and you handle the orders. In fact, many large companies like Target, Wayfair, and Create and Barrel dropship other brands as an additional channel for generating sales. However, certain forms of dropshipping are illegal on marketplaces like Amazon and eBay. For example, you are not permitted to dropship goods from Amazon to eBay and vice versa. In addition, dropshipping from AliExpress and other online markets are expressly prohibited on both Amazon and eBay. According to the terms of service for both marketplaces, purchasing products from another online retailer and having that retailer ship directly to customers is illegal if the shipment does not identify you as the seller of record. However, if you only plan on running a dropship store without Amazon and eBay, rest assured that dropshipping is 100% legal as long as you obtain a business license and seller's permit. How old do you need to be to dropship on Shopify? To open a Shopify store for dropshipping, you must be at least 18 years of age. If you are not 18 years old, you must register your Shopify store under a parent or guardian name with their permission. However, once you turn 18, you can transfer the registration of your Shopify store under your own name. How to start a dropshipping business? तो आप लोग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉपशिपिंग बिजनेस। स्टेप 1, स्टार्ट योर ड्रॉपशिपिंग स्टोर वेबसाइट। तो सबसे पहले जो है वो अपने ड्रॉपशिपिंग स्टोर वेबसाइट जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है। और ड्रॉपशिपिंग वेबसाइट जो है उसमें फिर आपके पास ये कुछ आ जाती हैं वो कॉमर्स शॉपिफाई वगैरह, ठीक है। स्टेप 2, रिसर्च प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आइडियाज़, ठीक है। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आइडियाज़ रिसर्च करें उनकी। आप लोग फिर फाइंड ड्रॉपशिप सप्लायर्स, अपना ड्रॉपशिप सप्लायर्स जो है वो फाइंड करें, ठीक है। और देन आप लोगों ने क्या करना है कि ड्रॉपशिप सप्लायर के बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट है कि ड्रॉपशिप सप्लायर आप लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ड्रॉपशिप सप्लायर फाइंड आउट करने के
بعد جو ہے ڈرائیو ٹریفک ٹو یور ڈراپ شپنگ اسٹور، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اسٹیپس ہیں جن کے ذریعے سے آپ لوگ ڈراپ شپنگ کا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے. آپ لوگوں سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. ہمارے چینل عباس آفیشلی کو سبسکرائب کریں. ٹیک کیئر.